Hello web developer, this is one of the amazing UI cards using HTML, CSS and JavaScript. We are going to create this card, okay, like this premium UI card. So you can explore button, you have explore button and icon and your title and co-title. So you can also add some more things in this card. So let's start to create this UI card. Okay, now we are in VS Code and let's create a folder for our project. Our project name is premium UI card. Premium UI card. Okay, this is our folder and create file inside this index.html. Index.html, go inside this HTML phase and create basic boilerplate of HTML. Press enter, you will get this boilerplate of HTML and change this title into premium UI card. Right here, premium UI card. And you can also link your CSS, and if you want to add this after CSS creation, you can also add this. Now move to body tag. In this body, first we create a div for particles and press enter. Go inside this particles. No, we will not get into this. Go outside and create card grid and go inside this card grid and create card and go to this card and create one more div for glow, one for glow and one for light, light div, LIGHT, and then again create a div for uh, card inner. Go inside this and inside this we will create one more div for icon. So let's take this icon and use layer also, and icon we will add this icon, okay, this one, and s3 tag with layer class. s3 tag में हम क्या लेंगे, premium UI card, and we can also run this on live server. So let's do this. In live server, our program looks like this on web browser. Let's minimize all of these things. Now separate these things into two parts and minimize this and create paragraph tag with class name layer, and our paragraph is advanced advanced 3D 3D glass uh, glass interaction effects. Okay, 3D glass interaction effect. After that, press enter and create a button with class name layer, and this button is explore button. Okay, save this and create a one more file. This is our program now. After this HTML, now move to style.css file. Create style.css. Go inside this file and link this file into this HTML. So link through link styles link the rel style sheet as href style.css. Save this. Now our style.css has linked into HTML. Now write our CSS program for all, margin 0, padding 0, box sizing border box, font family आप अपने अकॉर्डिंग ले लेंगे जो भी आपको लेना हो.
फॉन्ट फैमिली हम चाहते हैं कि पॉपिंस ले लेते हैं। ओके, पॉपिंस सैंस सेरिफ। हमारे बटन क्या है, थोड़ी परफेक्टली काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि मैं कीबोर्ड यूज़ कर रहा हूँ। नॉर्मली मैं जो लैपटॉप का कीबोर्ड यूज़ करता हूँ वो यूज़ नहीं कर रहा हूँ, इसलिए अननोन बटन्स पे क्लिक हो रहा है। ओके, नाउ मूव टू बॉडी टैग। इनसाइड दिस बॉडी टैग हाइट कितना लेंगे, हाइट 100 VH। डिस्प्ले फ्लैग्स, justify content center, align item center. Okay, we will take background also inside this background. Linear gradient लेंगे 135 degree and these colors 6 7 EEA comma 64 VA 4. Okay, you can take anything else. Okay, and overflow hidden. Move and use particles. Particles नाम की जो हमने क्लास क्रिएट की थी, particles is our class. Particles go inside this position, fixed, width 100%, height 100%, and background radial gradient लेंगे इसमें हम radial gradient RGBA 255 0.15 लेंगे, हाँ ले लेते हैं 0.4 ले लेते हैं। 1 पिक्सल कॉमा ट्रांसपेरेंट 1 पिक्सल। बैकग्राउंड साइज 40 पिक्सल एंड एनिमेशन लेंगे ना, मूव पार्टिकल्स 20 सेकेंड linear infinite z index 0 move ahead @ की फ्रेम्स। आइडेंटिफायर क्या लेंगे हम, मूव पार्टिकल्स जो कि हमने लिया है एनिमेशन में, मूव पार्टिकल्स फ्रॉम ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट y 0 to transform translate y -200 pixel. Okay, now these are moving. Now card grid लिख दिया, ग्रिड करना था and remove this one. पोजीशन क्या लेंगे हम, रिलेटिव एंड z इंडेक्स लेंगे 2. Okay, this one card grid. Now move to card. Next one, this card. Okay, card go inside this position, relative width 280 pixel, height how much, 380 pixel, background RGBA 1.5 and border radius how much, border radius लेंगे हम 25 pixel, border 2 pixel solid या 1 pixel ले लेते हैं, 1 pixel solid
RGBA 3 एंड बॉक्स शैडो ले लेंगे, कितना लेंगे 0, 30 पिक्सल, 60 पिक्सल, RGBA 000.3 and backdrop filter, backdrop backdrop filter blur 20 pixel and overflow hidden transform style preserve 3D transition transform 0.2 second ease. Okay, card, after that card this glow. Okay, now glow animation. Glow position लेंगे absolute and inset लेंगे कितना -2 pixel and background linear gradient 45 degree 45 degree and these colors background size 400% and border radius 25 pixel, animation border glow 6 second, linear infinite, z index -1, 6 second, linear infinite, z index -1. Now move at the rate keyframes, identifier border glow 0%, background position 0%, 100%, background position 400%. Okay, now glow is completely coming. Now light, we set this light position absolute, width 200 pixel and height 200 pixel and background only background, radial gradient circle RGBA 0.6, transparent 60%, transparent 60%, top 0, left 0, transform translate -50%, comma -50%, pointer event none.
Now move to next one, card inner. Now card inner, position, relative, padding 30 पिक्सल एंड कलर अगर आपको ब्लैक रखना है तो ब्लैक रख सकते हैं, अगर चाहें तो आप वाइट भी कर सकते हैं, लाइक दिस. ओके. नाउ लेयर, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट, जेड 40 पिक्सल, मार्जिन बॉटम 15 पिक्सल, आइकन, फॉन्ट साइज 40, फॉन्ट साइज कितना लेंगे 40 पिक्सल. नाउ बटन, बटन पैडिंग, पैडिंग कितना लेंगे 20 पिक्सल एंड 40 पिक्सल ले लें, ये ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो करते हैं इसको ले लेते हैं 30 और इसको ले लेते हैं 15 और 16, कुछ भी ले लो, ज़्यादा हो रहा है अभी भी, तो इसको 9 ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं 20, दैट्स फाइन. बॉर्डर रेडियस ले लो आपके अकॉर्डिंग, आपको जितनी भी लेनी हो. बॉर्डर रेडियस 25 पिक्सल ही ले लेते हैं. बॉर्डर नन नहीं करेंगे, बॉर्डर को रहने देंगे. कर्सर कर देंगे पॉइंटर, फॉन्ट वेट 600, ट्रांजिशन, ट्रांसफॉर्म 0.2 सेकेंड is. This is our premium UI card. Okay, so thanks for watching. This is all about our premium UI card. You can also use these type of UI cards in your web pages, so your web pages will be look like very amazing. So thanks for watching. Please like, share and subscribe if this video is helpful for you.